write down cost of living index number. Cost of living index number. इसमें there are two methods. First is method of total expenditure. Method of total expenditure. Now, what is cost of living? Cost of living. Cost of living. यानी जिंदगी जीने का खर्चा. Okay. Now, we are going to see overall cost of living index number. यानी किसी भी इंसान का क्या है उसका index cost of living index number. यानी last year उसका कितना cost of living था, ये साल कितना percentage से increase या decrease हुआ. Have you heard of this concept known as dearness allowance? जब जॉब करोगे तुम या अगर तुम्हारे पेरेंट्स जॉब करते हैं, there is a concept known as dearness allowance. ये dearness allowance क्या है? ऐसा कहते हैं मोंगवारी हर वर्ष बढ़ती रही है, महंगाई हर साल बढ़ रही है, उस proportion में लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए. You agree? Can we say because of effect of inflation, the prices of commodities increase every year? Okay? तो कंपनीज में हर साल एम्प्लॉइज को ये अलाउंस मिलता है जिससे उनका सैलरी इन प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो ये जो अलाउंस मिलता है, they get this extra money over and above their salary, okay, which will help them to compensate the effect of inflation. यानी लास्ट ईयर 100 रुपए में जो चीज आता था वो ये साल मुझे खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, से 110, तो मेरा 10% राइज होना चाहिए. ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. अब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ा पर सैलरी बढ़ा नहीं, तो क्या इफेक्ट आएगा परचेजिंग पावर में? परचेजिंग पावर विल गो डाउन. पर डियरनेस अलाउंस बढ़ा, पगार बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, बट इतना ज्यादा नहीं जितना सैलरी इंक्रीज हुआ, तो परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, पीपल विल स्पेंड मोर. अंडरस्टूड दिस? नाउ to construct a cost of living index number, there are two methods. First is method of total expenditure. Very simple. Cost of living index number is equal to sigma PIQ0 upon sigma P0Q0 into 100. What is this formula? Last year. Okay. And if based on quantity of current year, then the formula is sigma PIQI upon sigma P0QI into 100. What is this? Okay, now in absence of what we have to use over here, we'll always use last year. Is this clear? Okay, ये लिख लो. Then we go to the next one. Second is important. Family budget method. This formula also you have already done. As per this method, cost of living index number is equal to sigma IW upon sigma W. Now what is I? I is index number, also known as price relative, and if I is not given, PI upon P0 into 100. Understood this? Now W is equal to weight
which is equal to importance. Now, if weight is not given, ध्यान देना please. If W is not given in the sum, it is P0Q0. This is important. You understood this? If weight is not given, then price of base year into quantity of base year is the weight. Now, if I substitute this over here, what I will get is, say sigma, I is what? Pi upon P0 into 100. Weight is what? P0Q0 upon P0Q0. तो ये क्या हो रहा है? P0 cancel, PIQ0 upon P0Q0 into 100. Which method is this? Last year. Sigma PIQ0 upon sigma P0Q0. So this formula is also based on last year's index number. This can come as a multiple choice question. Understood this? How we proved it? समझ में आया सबको? लिख लो. अच्छा, ये फॉर्मूला किया हमने. Weighted index number. Okay, but वहाँ पे हमने ये नहीं लिखा था W is equal to P0 Q0. तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ. अगर weight नहीं दिया है और ये मेथड कहाँ है, तो we will use W is equal to P0 Q0. Come to exercise. Exercise 1.4, page number 38. The following data. Exercise 1.4. Oh, exercise 1.4, question number 1, page number 38. The following data are obtained from the family budget inquiry of middle class people. State the change in the cost of living in the year 2015 with respect to year 2013 by finding the index number. If the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is 15,000, ध्यान देना प्लीज कि अगर 2013 में average monthly disposable income was 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015. It means कि अगर 15,000 रुपए हम हर महीने खर्चा करते थे in the year 2013, तो 2015 में हम कितना खर्चा करेंगे? You understood this? Okay, इसको मार्क करो. Last line को important. Don't forget this in exam, otherwise half marks will be gone. Okay, let's start. Let's write down group. You can see cost of living में food, fuel, electricity, very important, rent, clothing, and miscellaneous. Weight, W. Food को सबसे ज़्यादा weight 45, then 15, then 10, then 20, and then 10. 100. So this is sigma W. Now, index is not directly given. What is given? Expenditure in 2013 and expenditure in 2015. Expenditure in 2013 लिख दो. Expenditure in 2013. Don't write P0 because it's not price, it is expense. And 2015. $3,000, 1450, 1500,
600 and 1600, 3900, 1850, 2400, 900 and 192. No need to do that. Index number I is equal to expense of 2015 upon expense of 2013 into 100. इंडेक्स फाइंड करने के लिए 3900 upon 3000 into 100, which is 130. Then 1850 upon 1450 into 100. How much? 127.59 exact. Okay. Round up. 2400 by 1500. The expenditure has increased by 35.64%. Can I say this? Okay, now लिखो average monthly disposable income 2013 was rupees 15,000. Therefore, estimate of necessary monthly disposable income is equal to 15,000 into 135.64 upon 100, which is equal to rupees 20,346 exact. ये समझ में आया सबको? फिर भी मेरी तरफ से एक बार 2013 में जब इंडेक्स 100 था तब मेरा एक्सपेंस was 15,000. अब इंडेक्स कितना हो गया? 135.64. तो अब कितना एस्टिमेट होना चाहिए? You understood this? Cross multiply. So this should be the income. Now, if my income is 18,000 in this year, what will happen to my purchasing power? It will go down. But if it is 25,000, it will increase. Understood this? Okay. लिख लिया सबने? Okay. Question number 2. Again, we have to interpret question बराबर पढ़ना. Because index number तो फटाफट फाइंड कर लोगे, पर इंटरप्रेट करना रह गया तो मार्क्स विल गो. Find the index number for the year 2014 by the method of family budget from the following data about prices and consumption of food items and interpret it. Now, over here, items are given, quantity of base year is given, price of base year is given, and price of current year is given. Now, which formula we have to use? Family budget. So we'll have to use this formula. Page number 38. Exercise 1.4. Question 2. Item beef, rice,
bajri and tur dal. Now 2010. Now you can see over here. See previous में ध्यान दो because आगे sums में आता है. Previous समय we had food, electricity, rent, clothing and miscellaneous. But food यानी क्या? Food यानी comprises of lots of elements जो हम खाते हैं. That is food. Now food यहाँ पे सिर्फ तुमने देखा food items है. तो फूड का अलग इंडेक्स आता है, फिर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का अलग आता है, बिकॉज फ्यूल में क्या आता है, पेट्रोल आता है, घर पे कुकिंग गैस, घर के लिए राइट, कुकिंग गैस और केरोसिन और देन इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सब का भी अलग अलग रेट पे प्राइस बढ़ता है या कम होता है. ओके, तो दिस इज हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. एनीवेज, right now we focus on this year 2010, Q0, P0. Year 2014, price, so P1. We'll first find index. Index number I is equal to Pi upon P0 into 100. Find out W, weight, P0, Q0. One, two, 80. 180. 125. Total 613. now I into W. What's the total? 4, 6, 0.60. Doesn't matter because the amount is so big. Anyways, वैसे भी round off में चला जाएगा. Therefore, cost of living index number sigma IW upon sigma W. One to 8.53. 128.53. Okay, लिखो. Since index number for the year 2014 is index number for the year 2014 is 128.53, the prices have increased by 28.53%, have increased by 28.53%. Page number 40, page number 44, 040 and illustration number 22.
mark it the most important. I'm sure this or this type of sum will definitely come in your exam. Okay? It's the details of expense on fuel. The details of expense on fuel for a group of workers of a region are as follows. Item: coal, kerosene, wood and matchbox. You can see quantity is given, price per unit is given for base year and for current year. So using this information we will find index number for fuel. समझ में आया? फ्यूल का हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. Prepare the index number of the group of fuel expenditure from these data. If the expenditure for food, clothing, house rent and miscellaneous group in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times respectively that of the year 2012, and if the expenditure on these groups are 42%, 15%, 10%, 12% respectively of the total expenditure, then prepare the underline karo cost of living index number for the workers. Now we have to find two index. First we have to find index for fuel, and second we have to find index overall cost of living index number. First write down for fuel. So illustration 22, page number 40, very important. First, index number for fuel. Right, item coal, kerosene, wood and matchbox. (2012) Q0 and P0. Quantity 5, 20, 5 and 10. Price per unit is already given, so no conversions required. Price per unit, तुमने देखा heading? Price per unit, so no conversion is required. Okay, so price per unit is 25, 40, 22 and 0.90. 2014 P1 30, 45, 25 and 1. Now, how will find the index number? Our formula PI Q0 and P0 Q0. One zero. Therefore, index number for fuel is equal to sigma Pi Q0 upon sigma P0 Q0 into 100. 1185 upon 1044 into 100. How much? 113.51. Now यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिर्फ मिस्टेक मत करना, बिकॉज यहाँ कोई गलती किया तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा.
Now we go to the second one. Cost of living index number. Let's write groups. Now what are the groups given? It starts with food, then clothing. Yeah, okay, I'll see that. House nahi hai, rent hai. House rent, okay. House rent. Miscellaneous. And then fuel. You understood this? एग्जाम में फ्यूल को मत भूल जाना, अदरवाइज ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो उसके अंदर फ्यूल भी आ गया ना. नाउ इंडेक्स नंबर्स आई लिख दो फिर मैं आता हूँ. ध्यान देना उसके लैंग्वेज पे. लिख लिया सबने? ओके, और नहीं लिखा तो वेट कर लो, बाद में लिख लेना. समझ लो पहले. सी, if the expenditure for food, clothing, house rent and miscellaneous groups in the year 2015 are 3, 2.5 and 4.5 and 3.25 times respectively that of year 2012. It means अगर 100 रुपए तुम खर्च करते थे फूड पे बेस ईयर में, अब ये कितना है 3 टाइम्स, तो अब कितना खर्चा करोगे 300. पर ऐसा दिया होता have increased by 3 times. समझ में आया? फिर से एक बार, अभी तुम्हारा पॉकेट मनी इज से फॉर एग्जांपल 100 और तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा नेक्स्ट मंथ से पॉकेट मनी डबल, तो कितना हो जाएगा 200. पर ऐसा कहा कि नेक्स्ट मंथ से योर पॉकेट मनी विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो तुम कितना मांगोगे? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? इंक्रीज टू एंड इंक्रीज बाय का डिफरेंस पता चला. एग्जाम में बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये सम्स में थोड़ा भी लैंग्वेज इधर उधर हो गया तो 100 से इंडेक्स नंबर में डिफरेंस आएगा. अंडरस्टूड दिस? यहाँ पे क्लियरली दिया है कि द एक्सपेंडिचर आर 3 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स. अंडरस्टूड दिस? यानी 100 था, हो गया 300. इट हैज बिकम 3 टाइम्स, 3 गुना. अब से तुम्हारा पॉकेट मनी 3 गुना. You understood this? So into 3. Understood all of you? Okay, so for food 3 times. So 300. For clothing 2.5. So 250. For house rent 450 and miscellaneous. How much? 325. What about fuel? 113.51. So this will come over here. 113.51. Understood this? All of you? Now, index तो find कर लिया. Wait. W. Now, expenditure on these groups are, यानी किस पे हम कितना खर्चा करते हैं. तो फूड पे कितना खर्चा करते हैं 42%, तो इसका वेट इज 42, then 50, then 10, then 12. What about this? 100 में से माइनस, बिकॉज परसेंट है. So out of 100 we spend on all these. So what is left? 21. So can I say 100 minus 79? 100 minus 79. So total is 100.
Now what we will find out? I into W. Any doubt? All of you understood? Now be very careful when you find the first index number, because if first is wrong, overall will also go wrong. How much? 12600. 7-1. Just a minute. How much? 7-1. Okay. Therefore, cost of living index number is equal to sigma IW upon sigma W. 2713.71 upon 271.34. Write down, since cost of living index number is 271.34, it can be said that the increase is 171.34. The increase is 171.34%. Yes. Exercise 1.4 में question number 3, page number 38. Compute the cost of living index number by method of total expenditure from the following data. Now item is there and unit is there, so please be careful when units are given. Then quantity of the year 2014, price of 14 and price of 15. Now you can see unit is quintal but quantity consumed is kg. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको convert करना पड़ेगा. So write the question. Exercise 1.4, page number 38, question number 3, important. Item A, B, C, D, E, unit, then 2014, so Q0 and P0, and 2015 P1. Now यूनिट में क्विंटल दिया है, ये यूनिट में क्वेश्चन में क्विंटल दिया है, और क्वांटिटी हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं 50 किलो. इट मींस जो प्राइस दिया है ना, the price 1200 is not price per kg, it is per quintal. You understood this? 1 quintal is equal to 100 kg. यानी अगर मैं खरीदने जाऊंगा और मैं बोलूंगा कितना प्राइस है आइटम ए का, so it says sir price is 1200. तो ऐसे 1200 में कितना आएगा, तो ऐसे 1 क्विंटल. अब मैं उसको बोलूंगा कि मुझे 50 किलो दो, तो क्या मैं 50 into 1200 पे करूंगा? No. I'll have to find out price per unit. In the previous sum, I told you कि देखो दिया है price per unit. So first we have to find out price per unit of what we are consuming. So यहाँ पे क्विंटल है पर कंज्यूम किया kg, तो क्विंटल will be converted into kg.
सो ये हो गया यूनिट 1 kg, कंजम्पशन 50 kg। अब प्राइस कितना हो जाएगा 1 किलो का? 1200 is for 100 kilo, so 1 kilo का rupees 12. Understood this? Okay, then 1700 will become 70. B में, now B में again unit is 20 kg, so 20 kg will be converted into 1 kg. 18 kg का consumption, price, so 340 is for 20 kilo, so 8 kilo का 17, and 380 is for 20 kilo, so 1 kilo का 19. Item C, 10 liter will become what? 1 liter. We are consuming 12 liter. Price will become 3 and 4. Then dozen. So dozen will be converted into piece. अब अगर 20 पीस के बदले 24 पीस होता तो क्या करते? 2 डजन कर देते। तो फिर हम प्राइस को कन्वर्ट करते नहीं। अंडरस्टूड दिस? यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर से एक बार, डजन का प्राइस है 15 रुपए, यानी 12 पीस का 15 रुपए। अगर मैं 20 पीस खरीदने चाहूंगा तो will I pay 300 rupees? Understood this? So I'll convert this 1 piece, 20 piece. 1.25 and 24 है ना? So 2 rupees. Okay. Then meter. Now meter में कुछ भी नहीं दिया है, and 14 meter, तो हमें उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 meter, 14 meter, 12 and 16. Understood this all of you? किसी को कुछ नहीं पता चला A B C D E में? कोई डाउट? D में, now D में है ना, क्या दिया है? See in item D, unit is given dozen, but quantity is given 20 piece. Price is given how much? 15 and 24. So 15 and 24. अब ये जो है ना price is of this unit. डजन का भाव है। अब हम कितना खरीदने जा रहे हैं? 20। तो जब हम करते Q0 into P0, can I do 20 into 15? It will be wrong. Okay, what I'll do is डजन को मैं कर दूंगा 1 piece. ये 20 का as it is रहेगा क्योंकि प्राइस चेंज कर रहा हूँ. This will become 1.25. This will become 2. Understood this? अब मान लो क्वेश्चन में ये 20 के बदले 24 होगा, तो फिर मैं डजन को डजन ही रहने देता, इसको कर देता 2 डजन, क्योंकि 15 रुपए पर डजन है, 2 डजन लिया तो 30 रुपए. Then I cannot do 15 into 24. You understood this? If I convert quantity, I will not convert price. If I convert price, I will not convert quantity. End result क्या आना चाहिए? नतीजा ये सब convert करने के बाद, this should all become 1, and this unit should be the same. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए इधर पीस है इधर डजन है, इधर क्विंटल है इधर केजी. Understood this? So these are basically now price per unit. You understood this? पहले भी price per unit था question में, but it was price per quintal. But I am buying kg. Got it? Now find out PIQ0 and P0Q0. Three 2 48 2 306 36 25 168
1135. This is 1135. 1135. Yes. 150. 150. 150.